打火机红烧。而且我想拔掉。By natural reef. Okay. So we take you by boat, stop by the reef, do snorkeling, and then we go to the next point, and then we come back. So it's more like yeah. तो गाइस अभी मैं हूँ हुलुमाले में एंड अभी लंच टाइम है. आई हैव फाउंड आवर न्यू फ्रेंड रिचर्ड. Hey, what's up?
ऑफ नवंबर और मैं अब जा रहा हूँ वापस इंडिया। हे गाइस, सो अभी मैं सिक्योरिटी चेक कर चुका हूँ और सारा प्रोसीजर मतलब बोर्डिंग पास वगैरह लेके अब यहाँ पे शॉपिंग एरिया है यहाँ पे। एंड मेरी फ़्लाइट जो है थोड़ी सी डिले है। पहली जो मेरी फ़्लाइट है वो कोची तक है, माले टू कोची। सो कोची जाके दोबारा से मुझे अपना बैगेज लेके कस्टम सिक्योरिटी चेक करना होगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि वो मेरा बैगेज डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते मुंबई। तो मैं जो जा रहा हूँ माले टू मुंबई, बट मेरा जो बैगेज है मुझे सेकंड बैगेज लेना पड़ेगा कोची में, देन दोबारा सब कुछ करके टर्मिनल चेंज करना होगा, क्योंकि माले से जाएगी T1 पे जो कि कोची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर वहाँ से मुझे टर्मिनल चेंज करके T3 पे जाना पड़ेगा जो डोमेस्टिक टर्मिनल है। सो बस अभी मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस। प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिलता है, परफ्यूम, वॉचेस, ज्वेलरी, सब कुछ है यहाँ पे। आपका टाइम अच्छे से पास हो सकता है। गाइस अभी कोची के एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूँ एंड मुझे यहाँ से दूसरे टर्मिनल पे जाना है, डोमेस्टिक वाले। एंड नाउ इमिग्रेशन चेक क्लियर हो चुका है। सो अब मुझे टर्मिनल चेंज करना है और मुझे मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी है। सो गाइस टर्मिनल 1 में पहुंच चुका हूँ। वॉक करके 5 to 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है टर्मिनल 3 से।